Okay, so I hope all of you have joined again. So let us see what happens in case of the hydraulic press. Basically, तो देखिए ठीक से hydraulic press is again another concept which is important to understand. See here. देखिए ठीक से ये एक सिंपल सा concept है hydraulic press can say. So what happens in this is there are two pistons which are like this. तो दो pistons जो है वो इस तरह से होते हैं जिसमें liquid content रहता है. Liquid is contained in these two pistons, and suppose that there is a first piston is pressed with a very small force, you can say F1, and the second जो piston है, it is automatically lifted up with the force F2 here. तो यहाँ पे जो F1 और F2 जो है, these are the two forces which are acting on this. So यहाँ पे F1 is the force acting on this small container whose area is going to be A1. We'll say A1 is the area of this first container, and F1 is the force acting on this first container, first piston here. And this area of the second container is A2, and the force exerted on this container from below by the liquid is going to be F2 actually. तो ये हम समझ सकते हैं आराम से. And here the force is exerted on this piston in the downward direction actually. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. अभी ये हम समझ सकते हैं कि जैसे हम ये पिस्टन यहाँ पे इसको F1 फोर्स से प्रेस करते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप होगा जिसको हम सपोज P1 बोल देंगे. तो if P1 is the force exerted on this container in this way, so and suppose that P2 is the pressure exerted by the container, so by the liquid on this piston, second piston here. P2 is the pressure. Okay. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि P1 and P2, according to the Pascal's law, the pressure P1 must be exactly same as the pressure at P2. But since P1 pressure, we know that pressure is always equal to force upon area. So if you use this here, then we get this as pressure force F1 upon A1, which is going to be equal to the force F2 upon A2, and hence we can get that this simple equation F1 upon A1 is equal to F2 upon A2, which can be simplified as F2 upon F1 is going to be simply equal to, so F2 upon F2 upon F1 is going to be equal to A2 upon A1, which means that F2 finally is going to be equal to, so F2 should be equal to A2 upon A1 into F1, where we'll see clearly that the force F2 acting on this piston is here. यहाँ पे जो force exert होता है वो actually बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि area इस piston का ज़्यादा है. तो यहाँ पे A2 upon A1 ratio, ये अगर suppose हमने A2 upon A1 जो ratio है वो अगर हमने suppose 10 रख दिया तो उसकी वजह से हमको ये मिलेगा कि F2 is equal to 10 times of F1. That which means that by applying a force of 1 Newton here, we can get the force of 10 Newton here in this direction. तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि एक सपोज अगर हमने यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स अगर अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से यहाँ पे हमको 500 न्यूटन का फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा. तो ये बात जो है वही हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर मायने रखता है, and that is the important thing here. So the force is magnified in the proportional to the area. जितना एरिया A2 इस एरिया A1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा
उतने टाइम्स यहाँ पे जो फोर्स है वो इस F1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। मींस बाय कीपिंग द रेशियो ऑफ एरिया 1:2, मतलब सपोज ये एरिया A2 जो है वो एरिया A1 का डबल अगर है, डबल है, तो एरिया A2 को A1 से डबल रख के हम यहाँ पे F2 को F1 से डबल कर सकते हैं। मींस बाय जस्ट अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स वी कैन गेट द 2 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि एक छोटा फोर्स छोटे एरिया पे अप्लाई करके हम बड़ा फोर्स बड़े एरिया पे एक्सर्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस hydraulic lift. This is the principle of hydraulic lift. But again, we have to understand here that we are not going to get any benefit with respect to the work done. वर्क डन के हिसाब से हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो फोर्स F1 यहाँ पे काम कर रहा है वो बहुत छोटे एरिया पे A1 एरिया पे काम कर रहा है, जो कि इस लिक्विड को सपोज D1 इतने डिस्टेंस पे अगर प्रेस करेगा तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, तो इनपुट में जो वर्क डन होने वाला है वो हम समझ सकते हैं आराम से। तो वर्क डन इन दिस फर्स्ट पिस्टन here will be equal to W1, which is going to be given by F1 into D1, no doubt. And at the same time, if we see this here, the F2 force, the force F2 acts on area A2 and displaces it through a distance D2 suppose. Then in that case, we can see that work done on the second piston is going to be actually equal to F2 into D2, which also means that here the force is more, but sorry, force is small, but the displacement here is going to be very large. यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस से हमको इसको प्रेस करना पड़ेगा नीचे तरफ, तब जाके वो नीचे जाएगा, और तब जाके ये जो पिस्टन है वो एक आधा मिलीमीटर या आधा सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। तो जिस डिस्टेंस से ये ऊपर जाता है वो डिस्टेंस बहुत छोटा है, D2 is going to be very small than D1 and this F2 is going to be larger than F1. तो एक्चुअली W1 और W2 की बात करते हैं तो ये पता चलता है कि W1 and W2 are going to be the same only, which means that the F1 into D1 is going to be exactly same as F2 into D2, which means that the input work done is going to be same as the output work done. So we are not going to get any benefit with respect to the work done, but force is getting magnified here. So यहाँ पे जो है फोर्स सिर्फ मैग्नीफाई हो रहा है, बट डिस्टेंस जो है वर्क डन जो है वो वर्क डन मैग्नीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि फोर्स इज मैग्नीफाइड एट द कॉस्ट ऑफ लॉस इन डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लॉस के बेसिस पे फोर्स मैग्नीफाई किया जा रहा है, एंड दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ hydraulic lift. You can see clearly, and this is basically now we'll see another animation which will explain this in more detail. Let's see it here. Yes, so let us see the so these are the some applications of Pascal's law, we'll say. Now we'll see the next topic in this chapter, that is about the construction of barometer. So let us see the construction of barometer. See it here. Barometer consists of actually consists of a test tube. See it here. Just wait. देखिए इस टाइप का
So this type of instrument is called as the barometer, which consists of a small test tube of 100 centimeter in length, and suppose it is here, it's like this. तो इसमें एक जो टेस्ट ट्यूब होता है, तो उसके अंदर मर्क्यूरी भरा जाता है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले मर्क्यूरी भरा जाता है पूरी तरह से, और उसके बाद फिर उस टेस्ट ट्यूब को हम इन्वर्ट करते हैं इन अ कंटेनर कंटेनिंग मर्क्यूरी इटसेल्फ। तो मर्क्यूरी के ही पार्ट में उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है। Okay, so this is the pot containing mercury. Okay, so this is the pot containing mercury, and it is inverted into the mercury container containing mercury only. And because of that, some mercury just flows out in this barometer, and because of that, you can see the level of mercury inside this barometer just falls down some by some distance, and that distance is actually 76 centimeter. तो पहले जो पूरा जो उसका जो लेंथ है वो एक्चुअली 100 सेंटीमीटर हुआ करता है। ये जो पूरा बैरोमीटर है तो वो बना हुआ है एक ऐसे टेस्ट ट्यूब से जिसका लेंथ एक्चुअली 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। और तो उस तक वो मर्क्यूरी पहले भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही हम उसको उल्टा कर देते हैं एक मर्क्यूरी कंटेनिंग पॉट के अंदर, तो उसकी वजह से वो तुरंत कुछ मर्क्यूरी उसमें से बाहर की तरफ फ्लो होता है, जिसके कारण अंदर में जो मर्क्यूरी है वो एक्चुअली 76 सेंटीमीटर तक नीचे आ जाता है इस तरह से। तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जब हम जानते हैं कि लिक्विड ये ट्राई करता है कि उसके कोई भी दो पॉइंट्स जो सेम लेवल पे है वो हमेशा सेम प्रेशर पे भी रहने के लिए ट्राई करते हैं। तो अगर हम समझते हैं ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट, सपोज ये जो अंदर वाला पॉइंट है यहाँ पे और ये जो बाहर वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, नो डाउट। और यहाँ पे अंदर जो प्रेशर काम कर रहा है वो इस मर्क्यूरी का गेज प्रेशर काम कर रहा है, हम समझ सकते हैं क्लियरली। So if we use that, this gauge pressure acting at this point here is going to be same as the atmospheric pressure acting at the point outside here. Then we can get that, and since these 2 points are at the same level, they should be at same pressure also. That means the atmospheric pressure which is acting at the point outside should be exactly equal to the gauge pressure which is actually acting at the point inside here. And that's why we can see and hence we can say that this gauge pressure becomes exactly equal, and because of that we can say that P naught is going to be actually equal to HdG. This is basically the formula for finding the barometric pressure. The barometric pressure can be found out by using this formula P equal to HdG, where H is going to be the 76 centimeter, where 70 centimeter can be converted into meter by multiplying it by 10 raised to minus 2, and the density of mercury as we know it is 13,600 kilogram per meters cube. तो ये अगर हम यहाँ पे डाल देंगे, और जैसा कि ग्रेविटी का वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है 9.8 सिंपली, तो अगर हम ये सब वर्कआउट करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा आराम से, दैट इज गोइंग टू बी द 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square, which is also called as the 1 atmospheric pressure. So this is the value of P naught which is obtained from barometer in this way. तो
तो बैरोमीटर यूज करके हम उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, और यही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो काम करता है। अभी ये हमको समझना अच्छी तरह से कि कभी कभी जो है प्रेशर जो है इस बैरोमेट्रिक मीटर के द्वारा मेजर किया हुआ जो प्रेशर है वो हमको कभी कभी सेंटीमीटर में भी दिया जाता है डायरेक्टली। अगर सपोज कहीं किसी प्लेस पे हम चले जाते हैं और वहां पे बैरोमेट्रिक प्रेशर मेजर करते हैं, और वहां पे जो बैरोमेट्रिक प्रेशर है वो अगर हमको मिल जाता है सपोज समथिंग लाइक 72 centimeter of mercury, then we can understand as soon as the barometric pressure is 72 centimeter of mercury, it means that the pressure at that point must be actually HDG। ये सेम फॉर्मूला से हमको निकालना होगा। सिर्फ जिस पॉइंट पे यहाँ पे ये बैरोमेट्रिक प्रेशर 72 सेंटीमीटर के बराबर है, तो वहाँ पे एक्चुअल प्रेशर कितना होगा तो हम निकाल सकते हैं आराम से 72 multiplied by 10⁻² -2, and that is to be multiplied by density of mercury, which is 13,600, and that is multiplied by 9.8 as it is. So this will give us the pressure at that point in this way। तो जैसे टॉप किसी माउंटेन के माउंटेन के टिप पॉइंट पे अगर हम जाते हैं या बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे या हायर लेवल पे अगर जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि प्रेशर विल बी इक्वल टू 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इवन इट मे बी लेस देन दैट, डिपेंड्स कितना हम ऊपर जाते हैं। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, and that pressure can be actually measured by the barometer, which is simply a device which is based on this mercury। तो मर्क्यूरी उसके अंदर कंटेन रहता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और उसको मर्क्यूरी के पॉट के अंदर इन्वर्ट किया जाता है, उल्टा कर दिया जाता है विदाउट एनी एयर बबल्स। एंड as soon as we can get this mercury and fall down by some distance using this formula, we can immediately find out the barometric pressure or atmospheric pressure at that point easily। So this is the use of barometer to find out the atmospheric pressure। The next is about the manometer। So see how the manometer looks like। This is a simple diagram of manometer। इस तरह से मैनोमीटर दिखता है, ठीक है। अभी इसमें हम देख सकते हैं कि see here, this manometer consists of a bulb which contains air, and it consists of a mercury again here। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ है, नो डाउट। और उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो बल्ब है वो हमको इंसर्ट करना होता है जहाँ पे भी हमको प्रेशर मेजर करना है, जिस भी लिक्विड का प्रेशर हमको मेजर करना हो तो उसका वहाँ पे हमको उसको डिप करना होता है। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट और मेजर द प्रेशर at a point inside some container like this।
suppose we have this container. And suppose we want to find out the pressure at this point here. तो इस कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है वो अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको एक सिंपल सी बात जो करनी है वो ये होती है कि ये जो बल्ब है वो हमको उठा के यहाँ पे डालना होता है, इसके अंदर डालना होता है। जैसे हम वो डाल देते हैं तो उसकी वजह से जैसे हम उसको नीचे नीचे लेके जाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ये हाइट में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। So as soon as there is a difference between the two heights here, we can measure that difference and just get the pressure inside this. So using the same formula once again, if we have this difference in heights is h suppose, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अगर सपोज हमने h मान लिया है तो उसको यूज करके हम यहाँ पे यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू P नॉट प्लस h रो g। सिंपली यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आराम से और हमको इस तरह से प्रेशर मिल जाता है कोई भी मैनोमीटर के अंदर का। So this is the working of manometer we have seen already. Now we'll see this textbook. तो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो ये सब कंसेप्ट्स है वो यहाँ पे है। सबसे पहले हमने देखा पास्कल्स लॉ एंड द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, in which the small force can be applied on a small area to produce a pressure which is equal to the pressure inside another container where the large force is exerted on the larger area, and because of that you can get a benefit with respect to the force but at the cost of decreasing the distance, no doubt. And here we have seen the hydraulic brakes, the concept of hydraulic brakes ये भी हमने देखा जिसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो है वो चार अलग अलग पिस्टन्स के साथ वो पाइप कनेक्टेड होता है और उसकी वजह से जैसे ही हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो चारों व्हील्स के ऊपर ब्रेकिंग एक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली काम करता है और उसकी वजह से चारों व्हील्स एट अ टाइम रुकते हैं और उसकी वजह से जो पूरा कार रोकना पॉसिबल होता है। नहीं तो हम जानते हैं कि टू व्हीलर के अंदर हम समझते हैं कि देयर आर टू व्हील्स, तो अभी अगर सपोज हम एक व्हील को पीछे वाले व्हील को भी अगर रोक देते हैं तो अगला वाला व्हील थोड़ा बहुत अगर कम स्पीड से अगर चल भी रहा है तो भी उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि दोनों व्हील्स को रोकना हमेशा रेकमेंड किया जाता है और उसके लिए डिस्क ब्रेक्स या फ्रंट ब्रेक एंड बैक साइड का जो ब्रेक है तो दोनों एट अ टाइम प्रेस करना रेकमेंड किया जाता है। लेकिन चार जो व्हील्स है, फोर व्हीलर को चार व्हील्स होते हैं, अभी इन चारों व्हील्स को एट अ टाइम रोकना तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हमको चार चार ब्रेक्स लगेंगे और अगर चार चार ब्रेक्स तैयार करके रखेंगे भी तो भी चारों ब्रेक्स को प्रेस करने के लिए चार चार हाथ कहाँ से लाएंगे और उसकी वजह से ये सब जो प्रॉब्लम्स है तो वो एक सिंपल पास्कल्स लॉ की वजह से सॉल्व हो जाते हैं और उसमें हम एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करके वही प्रेशर चार अलग अलग व्हील्स के ऊपर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से चारों व्हील्स इक्वली ब्रेकिंग एक्शन टेक्स प्लेस ऑन ऑल फोर व्हील्स इक्वली and because of that the whole car just stops almost immediately, and this happens in case of the hydraulic brake system. And then we will see the concept of barometer, mercury barometer, which consists of a simple test tube whose length is 100 centimeter containing mercury, which is inverted in the pot containing mercury. And here we'll see that the pressure at the point C here is going to be same as the pressure at the point B here. But as we know that the pressure at point C is nothing but the atmospheric pressure, whereas the pressure at point B is going to be the gauge pressure, which is exerted by the pressure exerted by mercury column of this 76 centimeter height. And hence we can get that the atmospheric pressure, that is P naught, is equal to H rho G. ये जो फॉर्मूला हमको मिलता है यहाँ पे ये वही फॉर्मूला है, P naught is equal to H rho G for the barometric pressure inside the barometer. At the same time we also seen the open tube manometer here. तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो होता है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि उसका जो ओपन ट्यूब है, ये जो बल्ब है वो बल्ब हम कहीं भी इंसर्ट कर देते हैं जहाँ पे हमको उसका प्रेशर मेजर करना होता है। जैसे हम वो मेजर इंसर्ट करते हैं तो इन दोनों लिक्विड के लेवल में
हाइट में डिफरेंस आ जाता है, और वो हाइट डिफरेंस नोट डाउन करके ही, और एच रो जी पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करके ही हम उस पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं जहाँ पे ये बल्ब प्रेजेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द formula for finding the pressure using the open tube manometer. And all these topics we have done in the today's lecture. So to surface tension, the concept of surface tension and the uses of surface tension, molecular basis, what is exactly surface tension and how it behaves, what does it depend upon, ये सब चीजें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में देखेंगे. तो but again I will just request you to attempt all the tests which are given to you, and also the numericals which are sent to you in the app. Android app के अंदर तुमको जो टेस्ट मैंने सेंड किए हैं उनको आपको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशंस जो है वो सॉल्यूशन आपको अपलोड करने हैं. ठीक है, तो जो सॉल्यूशंस है ऐप में से ही अपलोड करने हैं. फीडबैक सेक्शन जो आपके पास है ऐप के अंदर, एक फीडबैक करके सेक्शन आता है, तो उस सेक्शन में अगर आप ये करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिसको यूज करके आप वो फाइल अपलोड कर सकते हैं. और उसके लिए आपको पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, नॉर्मल अपने नोटबुक पे सॉल्व करो और उसका फोटो निकाल के वो अपलोड करो. ठीक है, तो वो करना है. और दूसरी बात कि आपको टेस्ट भी, ऑनलाइन टेस्ट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अभी ये भी हमारा जो लास्ट चैप्टर हुआ था रोटेशनल डायनेमिक्स, तो रोटेशनल डायनेमिक्स के ऊपर हमने कुछ टेस्ट बना के अपलोड किए हैं, तो वो टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करने हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने वो अटेम्प्ट किए हैं, 2 या 3 लोगों ने सिर्फ वो टेस्ट दिए हैं. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अटेम्प्ट दोस टेस्ट्स इमीडिएटली. आज ही आपको ये सब टेस्ट देने हैं. All these concepts so that we can continue tomorrow. Okay? तो ये लेक्चर मैं अभी यहाँ पे एंड करता हूँ. Thank you all of you from my side. Any doubts from anybody? किसी को कुछ पूछना है? दीपक सर का लेक्चर है क्या आज पर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं एक लेक्चर एंड कर रहा हूँ. No, sir. Okay, so thank you all of you. Thank you very much.